આગળ વધીએ. આજે જે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને સેક્ટરની ઉપર વાતચીત કરવા માટે અને સાથે જ કેવી રીતના આગળ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ટર્નઆઉટ થઈ રહ્યા છે એના વિશે વાતચીત કરવા માટે હેપીએસ્ટ માઇન્ડ્સના એમડી અને સાથે જ સીઈઓ વેંકટરામન નારાયણન અને प्रेसिडेंट અને सीईओ राजीव शाह. बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. राजीव सर, स्वागत है आपનું પણ શો ઉપર. અને સૌથી પહેલા ડિમાન્ડ સાઇડની કન્ડિશનથી હું શરૂઆત કરવા માંગીશ, કેમ કે કોવિડના રિલેટેડ જે પ્રમાણે પ્રેશર્સ આપણે જોયા હતા, ડિસ્ટ્રપ્શન્સ ઘણા આવતા દેખાયા હતા. સેક્ટર એમાંથી થોડુંક ઉભરી રહ્યું છે. જેટલા બી એનાલિસ્ટ સાથે મેં ચર્ચા કરી છે, ડિમાન્ડ સાઇડ કન્ડિશન સારી છે. તમારા મતે કેવી રીતના રિવાઇવ કરી રહ્યા છે, પ્રી કોવિડ લેવલ્સ કેવી રીતના ટર્નઆઉટ થતા જોઈ રહ્યા છો તમે, એની એક હાઇલાઇટથી શરૂઆત કરીએ. Thank you for having Venkat and I. તમારો ઘણો ઘણો આભાર. આપણે જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી કે now we are moving into post-COVID world and the market no sentiment as well as the customer no sentiment is quite positive. જે એક વર્ષમાં એ લોકોએ એમના બિઝનેસ પ્લાન રીવેલિડેટ કરવાના અને બધું ચાલુ કર્યું હતું. I think that demand environment ઘણું strong છે અને the opportunities to drive digital transformation અને that એ બધા businesses ની priority બની ગઈ છે, I think is very very positive news for happiest minds and the organization. Demand environment ઘણું strong થયું છે. And it's not just એક industry segment. I think એ બધા industry segments of તમે જુઓ તો બધા vertical, retail, CPGs to healthcare, financial services, and I think બધા sectors માં positive sentiments દેખાઈ રહ્યું છે. अग्रीड सर. अच्छा वेंकट सर, आपसे मैं एक और चीज़ समझना चाह रही थी, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, डिमांड के साइड कंडीशन बेहतर है, लेकिन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स काफ़ी एड ऑन हो रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले अब कंडीशन क्या है, और इनकेस थोड़ा अगर रिवाइवल आ रहा है, कितना टाइम लेगा ये 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स जब तक थोड़ा नॉर्मलाइज हो पाए? सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट तो है ही है. तो आप जो देखे थे हमारे पहली तिमाही में हमारा एट्रिशन रेट था 14.6%. तो वो तो वैसे भी हाई है हमारे प्रीवियस क्वार्टर्स को कंपेयर करके देखेंगे तो. अब भी वो ऊपर ही जा रहा है और ये इंडस्ट्री वाइड सिनेरियो है. हमारा सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइड सिनेरियो है. मगर हम भी इस इंडस्ट्री में बहुत साल से है. अगर आप मैनेजमेंट को देखेंगे तो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ऐसे ही इंडस्ट्री में बहुत बार पिछले वर्षों में भी आया था और हमने हैंडल किए थे. तो उसको देखे अगर आपको एक पॉजिटिव पॉइंट देखना है तो हमारा पहली तिमाही में हमने 310 हैप्पीएस्ट माइंड्स को ऐड किया था. तो ये इसी सिनेरियो, डिमांड सिनेरियो को मीट करने के लिए हमने ऐड किया था. और मैंने अभी ये भी कहा था कि तीन नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी अगर ऐसे हम ऐड करते रहे तो बहुत खुशी की बात ही होगी, क्योंकि हमारा डिमांड वेरी पॉजिटिव है. जैसे राजीव साहब ने बोला कि वो बहुत पॉजिटिव है और उसको मीट करने के लिए हम हायर करते रहेंगे. और ये सिचुएशन जो आप एट्रिशन का देख रहे हो, ये इंडस्ट्री वाइड सिनेरियो है और हमारा एट्रिशन भी ऊपर जाएगा, उसके बाद स्टेबलाइज होके नीचे आने का ही प्रोबेबिलिटी है. और ये तो मेरे ख्याल से, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ वैसे भी, क्योंकि ये डेवलपिंग सिचुएशन है, नहीं तो भी 1 साल या 1.5 साल में ये स्टेबलाइज होने का ही है. जो हमारे पास लीवर्स है वो प्राइसिंग लीवर है, यूटिलाइजेशन लीवर है, और जैसी ऑफशोर का हम काम करते रहते हैं, 95% हमारा ऑफशोर है, वो भी हमारा एक लीवर होता है. तो इस पे हम एडजस्टमेंट करा के इस प्राइस कॉस्ट इंक्रीज को मैनेज करेंगे. બિલકુલ. અચ્છા રાજીવ સર, ઇન ટર્મ્સ ઓફ માર્જિન્સ, કેમ કે આપણે જે રીતના ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે, એટ્રિશનનો એક પ્રોબ્લેમ ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇડ રહ્યો છે, સપ્લાય સાઇડના કન્સ્ટ્રેન્ટ્સની વાત કરી, કેવી રીતના એક્સપેક્ટ કરવું મારે નેક્સ્ટ 2 to 3 ક્વાર્ટર્સ, જ્યારે આપણે ઓલરેડી થોડા કન્સર્ન્સ લાઇન અપ થતા જોઈ રહ્યા છીએ, એડ્રેસ કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે, તમારી સ્ટ્રેટેજી શું રહેશે? So
પહેલી વાત તો એ કે ફોરવર્ડ લુકિંગ ફોરકાસ્ટ તો આપતા જ નથી અમે, અને આઈ થિંક ઇઝ બટ વોટ વી હેડ કમિટેડ ટુ, અને વેંકટે ટોક્ડ અબાઉટ ધ લીવર્સ ધેટ વી હેવ. First of all, I think that our attractiveness from Happiest Minds perspective, digital business, so our ability to attract people is pretty high. બીજું છે કે there are levers of utilization, there's levers of price increases, and ત્રીજું અમે ઘણી એક્ટિવલી ધ્યાન રાખીએ છીએ કે જે લોંગ ટેલ અકાઉન્ટ્સ હોય, what do we do with them? જે accounts have been giving us good revenue, but they may not be giving us the right growth. So એને બી વધારે પડતું જોઈને utilizing those resources for the larger growth opportunities. So overall margin, what અમે IPO વખતે કીધું હતું, every quarter કહીએ છીએ કે will continue to be into 22-26%, so 22 to 26% type of EBITDA margins, and will continue to be in that range. And I think that we all gear towards doing that. So operational, continue to manage the utilization better. Where there is price increases, there are opportunities are there. Get out of the long tail accounts, and continue to manage conversion from time and material to fixed price, to manage bulk, etc. I think that we are very confident that the margin impact हशे नहीं. अग्रीड सर. अच्छा वेंकट सर, आपसे एक और चीज़ मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि डिमांड साइड कंडीशन की हम लोगों ने बात की, डील पाइपलाइन किस तरीके से वर्कआउट हो रही है, और जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ पिछले क्वार्टर के दौरान नियरली 46 आपके ऐसे क्लाइंट्स थे जो 1 बिलियन से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे. 1 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी मार्कअप कर चुके थे. इस बार ये आंकड़ा कितना बढ़ के आया, नया क्लाइंटल एडिशन कितना है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. हमारा क्लाइंट डिमांड अच्छा है, वही इसी के कारण हमने 310 हैप्पीएस्ट माइंड्स का नेट एडिशंस किया था. नेट एडिशंस यानी कि वो एट्रिशन के ऊपर हमने ऐड किया था. तो हमारा कंपनी का हेड काउंट 310 से बढ़ गई है, और ऐसे ही हम स्थिति देख रहे हैं दूसरी तिमाही में. और अगर हम तीसरी और चौथी में ये कर पाएंगे तो हमारा डिमांड we'll be able to meet to a certain extent. तो वो ही है हमारा सप्लाई, हमारा चेन डिमांड पाइपलाइन का एक एग्जांपल. So that's if I have people, we can do lots more of work. अगर आप कहेंगे तो लिमिटिंग फैक्टर अभी सप्लाई का ही है, और वो हम मैनेज करेंगे. तो डिमांड पाइपलाइन अच्छा ही है. और पहली तिमाही के एंड में हमने 163 क्लाइंट एडिशंस था. तो क्लाइंट नंबर्स थे हमारे साइड में, और there are good additions, but right now we are a little careful because demand जो आ रहा है वो नए client से भी आ रहे हैं और existing client से भी आ रहे हैं, और we have to service the existing people so that we don't take on additional work and not be able to fulfill, because that will be a big travesty. That will be a problem. So we have to be very careful. और जो $1 billion clients के नंबर आपने दिए थे 47, those are also continuing strong because existing client demand is also higher. और एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो लिवर के बारे में बात कर रहे थे हम, प्राइस इंक्रीज जो प्रेस में, हमारे इंडियन प्रेस में इतना अटेंशन ड्रॉ किया है कि ये सप्लाई चैलेंज के बारे में, तो क्लाइंट्स को भी इसका हवा मिल गया है. वो भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है. वो भी कहते हैं कि हाँ, हमको भी मालूम है कि अगर आपको इतने ये स्किल पे एडिशन करना है तो इतना कॉस्ट बढ़ता है. तो वो भी हमारे साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक है. तो वो भी एक अच्छा हुआ है जो हमारे प्रेस में इतना सप्लाई वॉर फॉर टैलेंट करके हेडलाइन करके बहुत सारे न्यूज़ बहुत आ रहे हैं. सो दैट्स अ पॉजिटिव स्पिन टू द होल थिंग. અને હું જેમાં જસ્ટ એડ કરું, આઈ થિંક એક ક્વેશ્ચન તમારો, તો સેલ્સ પાઇપલાઇન આઈ થિંક ઇઝ પ્રેટી સ્ટ્રોંગ ફ્રોમ અમારા એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર એઝ વેલ એઝ અ ન્યૂ કસ્ટમર. સો એક્વિઝિશન ઓફ ન્યૂ લોગોસ is doing very well. By leveraging the acquisition that we had done, PGS નું acquisition જે કર્યું હતું,
એના લીધે જે ક્લાયન્ટની ડિમાન્ડ ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશનની અમે ઇન્ક્રીઝ કરી શક્યા છે એ લોકોના એક્ઝિસ્ટિંગ અકાઉન્ટ્સમાં, which is also very positive. So overall sales pipeline is strong. Revenue per customer is also moving in the right direction. અમે પહેલા ક્વાર્ટરમાં જ બતાવ્યું હતું કે જે 600,000 હતો 760 પ્લસ થઈ ગયો હતો અને continues to move in the right direction. અમે આ long tail accounts નું થોડું reduction થશે. That will also have positive impact on revenue per customer going up as well. So overall sales pipeline is strong in all the verticals. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હતા એક્વિઝિશનના is yielding very positive results for us to by taking Happiest Minds assets. So અમે quite optimistic છીએ અને that the growth will continue.